So, thank you so much. Yeah, you can applaud. Okay. So, my name is Sahana. I am from Bangalore and I am a civil engineering. That is all about my. Thank you so much. अरे यार स्कूल की याद दिला दी आपने. Okay. So, I'm basically a Kannadiga. Native from Bangalore. Okay, how many Kannadigas in the room? Wow, that's great. How many can understand Kannada but don't talk Kannada? Yeah, lift hands. Okay, guys. Thank you so much. So, basically, to become a civil engineer, I studied engineering for 4 years. Okay, coming to civil engineer was actually a tragic story. The thing was, I wrote CET and NATA, both things. For people who don't know about NATA, it's an so-called exam which is written for architecture. Okay, उसमें 200 मार्क्स का पेपर आता है, उसमें सिर्फ 150 मार्क्स का ड्राइंग होता है, और मेरा ड्राइंग तो भगवान को प्यारा है. So okay, I just cracked it somehow, yeah. And then my most favorite math ditched me. So indirectly architecture ditched me. बायोलॉजी तो पहले से ही रूठा हुआ था मुझसे, एंड CS का कुछ सिर पे नहीं जा रहा था. इलेक्ट्रॉनिक्स का भूत तो PU में ही उतर गया था, इसलिए कोई ऑप्शन नहीं मिला सिविल में ज्वाइन की. बट सिविल इज़ अ प्रिटी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट. I didn't learn anything in 4 years. I passed all my exams, basically. But what my brother says is, कुछ भी किया या ना किया, पढ़ा या ना पढ़ा इंजीनियर में, you'll just learn to handle your life. You'll just learn to handle your people. You'll just learn to handle your wife by handling teachers. That's other thing. I mean to say, रूठा हुआ types. That's it. Okay, guys. So, please do adjust with my Hindi. It's not that good, but I'll try to speak in Hindi. This show, I would like to put it as Pehli Baar. So usually the drill would be like, I would just say a storyline with the poetries in it, but I'll try to say the storyline in a poetry way. पहली बार मुझे एक काम मिला था. पहली बार मैंने लोगों से मिलना शुरू की थी. पहली बार एक इंट्रोवर्ट होने के नाते मैंने खुलकर बात करना सीखी थी. पहली बार ऐसा लगा था कि जाने लोग ही अनजान करने वाले इस दुनिया में अनजान लोग मुझे अपने समझ रहे थे. पहली बार मुझे ऐसा लगा था कि मैं खुलकर हंस सकता हूँ, फुल साउंड के साथ हंस सकता हूँ. पहली बार मुझे प्यार दिख रहा था, सिर्फ वो लस्ट वाला प्यार नहीं, दोस्त वाला प्यार, ब्रदर वाला प्यार, बॉस वाला प्यार, कोलीग वाला प्यार. पहली बार मैं सबके साथ बात करने लगी थी. बड़ा सा इंट्रोवर्ट थी मैं. I mean, I wasn't even talking to the people next to me at all. So, पहली बार मुझे बेस्ट फ्रेंड के नाम में 3 दोस्त मिले थे. पहली बार मैं एक दोस्त के सामने खुलकर रोई थी. पहली बार मैंने अपने सारे सीक्रेट्स शेयर किए थी. पहली बार मुझे ऐसा लगा था कि मैं खुलकर जीना सीखी थी. So, there is a small poem. Okay, after all this पहली बार, there was one पहली बार wherein मैंने एक दोस्त को ना बोली थी कुछ चीज़ के लिए. या एग्जैक्टली ना बोली थी. पहली बार उसे ना इसलिए बोली थी क्योंकि शी वॉज गोइंग इन अ रॉन्ग वे. पहली बार मुझे पहला प्यार हुआ था गाइस इन माई जॉब. सो पहली बार उस प्यार के लिए एक कहानी डाली थी. बिट्रेयल वर्क फ्रेंड के लिए बाद में आऊँगी. सो द पोएम गोज समथिंग लाइक दिस. आंखों से तूने कह दिया, बातों से क्यों मना किया, जो है वो प्यार है, मैंने तो ये मान लिया. ये दिल फरेबी है पर तुझ पे ही मरता है, दिन हो या रात हो तेरे बातें ही पढ़ता है. अक्सर मैं यहाँ वहाँ ढूंढता हूँ अपने आप को, जो दिख जाए तू सनम भूल जाता हूँ सब बातों को. थैंक यू. दिस इज लाइक
This is like one of my most favorite poems because पहली बार प्यार के लिए लिखी थी दिल से. So after this पहली बार बोली थी ना, पहली दोस्त जो जली थी, वो क्या कि सबको पहली बार मेरे बारे में अफवाह फैलाई थी. So पहली बार मेरे पहले प्यार को भी ये अफवाह सुनाई दी. पहली बार वो मुझसे बात नहीं किया था. So पहली बार मैं डरी थी. पहली बार अकेले रहने के लिए डर रही थी. इंट्रोवर्ट थी चाइल्डहुड से, अकेली थी पर डरी नहीं थी कभी. So पहली बार उस डर के लिए इंग्लिश पोएम लिखी थी. Fear of failing, fear of falling, fear of losing, fear of being alone, fear of misunderstanding, fear of self-doubt, fear of bad omens, fear of shouting out, fear of talking truth, fear of loving few, fear of parting away, fear of losing trust, fear of draining love, fear of pain in love, fear of life ahead, fear of life behind, fear of growing high, fear of stagnant life, fear of all, fear of none, fear of losing all your fun, fear of starting living. You start living only when your fear is done. Be an eagle to fly past the fear, because once you are done, the fun has just begun. So guys, all I have to say with this poem is, don't fear anything. I mean, fear hona padta hai. I mean, that's just momentary. You'll just go pass through it. So after that, I had a series of bad situations and stuffs, and then started seeing the world. When everyone starts seeing the world, they see what people are, what are their faces are, what kind of, few of them would be wearing a mask, but few of them seems to be wearing a mask but won't be wearing it. So there is a poem for a cruel world. Be aware of the cruel world. It always has a smile that's absurd. I wonder why its mask never adjourns. Could I just pull it off to prove it at once? Damned. It's just so thick, stuck to the skin. Seems like naturally born within. Sick and tired of predictions. Chameleons are better than these convictions. Fuck it. Can't help living with these creatures. Can't die cause some people still love us. Once you neglect things, just go on. But once you adjust, things become worse. Thank you. So, after all this, the greatest guilty pleasure is food. I started becoming foodie. So I started writing about food. Most of the Karnatikas, Bangaloreans know there is a hotel called as Dwaraka here. The Kali Dosa is really famous in there. So there is a poem on Kali Dosa. Guys, is it boring? Okay. One plate Kali Dosa khate. Bisi bisi dosa, mele jinuguva benne. ಮಿರಿದು ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ತಿಂದೆ. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೊಡನೆ ಕರಗೋ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ಕನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಹಾ ಎಂಥ ಸ್ವಾದ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಚಪ್ಪರಿಸಿ ತಿಂದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಸ್ವಾದವ ಬಿಡಲಾರದೆ 1 ಕಪ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಆ ರುಚಿಯನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೆ. ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ವೇಯಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಕಂಡು ಓ ಗಾಡ್ ಅಂದುಕೊಂಡೆ. Okay. So, dosa to made me conscious. Then I shifted to this Kunigal idli. Trust me, it's the most fluffiest idli I have ever eaten. Okay. Here is one last poem about Kunigal idli. Kunigal tatte idli, Bengaluru siktad nodri. Aha Kunigal tatte idliya swada, ಬೆಣ್ಣೆ ಸೋಕಿದೊಡನೆ ಕರಗುವಷ್ಟು ತಾಜಾ ತಾಜಾ. ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲವೇ ನನ್ನ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ಟೆಗಳ ನಾದ. ಕೌಂಟರ್ ಹತ್ತಿರ ಕ್ಯೂ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟುದ್ದ? ತಿನ್ನುತ್ತಿರಲು ಗರಂ ಗರಂ ಉದ್ದಿನ ವಡೆ. ಬಡಿಸುವವನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅರುಚಿದ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಚಟ್ನಿ ಹಾಕ್ಲೆ. ಎಷ್ಟು ತಿಂದರೂ ಸಾಕು ಎನ್ನೋದು ನಾಲಿಗೆ. ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸುಮ್ಗೆ. ಸೊ
thank you so much, guys. That was my time. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe. Thanks for watching.